going to discuss about the DON articles. तो अगर आप लोग CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे की या करंट अफेयर्स की या PMS की, PPSC, FPSC की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आप DON आर्टिकल्स की हेल्प ले रहे हैं अपनी वोकैबुलरी के लिए, आपको पता है कि CSS की प्रिपरेशन के लिए DON आर्टिकल्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये गाइड करना चाहूँगी कि आपने डॉन आर्टिकल्स को पढ़ना कैसे है, आपने डॉन आर्टिकल से अपने लिए अपना मटेरियल कैसे गैदर अप करना है, कौन सा रेलेवेंट मटेरियल है, कौन सा इररेलेवेंट मटेरियल है। और सिर्फ डॉन आर्टिकल को पढ़ लेने से ही या आपने उसका रट्टा नहीं मारना, आपने उसको क्राम नहीं करना, आपने डॉन आर्टिकल को क्या करना है, सिर्फ आपने उसको गो थ्रू करना है, उसमें से इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी कैसे निकालने हैं, इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस कैसे निकालने हैं और डॉन आर्टिकल आपकी प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करेगा, मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक अपना रजिस्टर लेना है, नोटबुक लेनी है या कोई जर्नल जो आप मेंटेन कर रहे हैं उस जर्नल को आपने लेके उसके पोर्शंस बना लेने हैं। अब आप लोगों ने पोर्शंस कैसे उसके बनाने हैं, आपने उन जर्नल्स में लेट्स सपोज आपने सबसे पहले एक पेज पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखने हैं। इसके लिए आप लोग हेल्प ले सकते हैं पास्ट पेपर्स की, CSS के पास्ट पेपर्स, इंग्लिश ऐसे की 10 इयर्स के आप ले लें, 15 इयर्स के ले लें, 20 इयर्स के ले लें। आई वुड सजेस्ट कि आप 15 इयर्स के पास्ट पेपर्स ले लें। उसमें आप क्वेश्चंस या उसमें ऐसे के टॉपिक्स को नोट डाउन करना शुरू करें। उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, किस टॉपिक के अराउंड वो आपसे ऐसे के बारे में पूछता है। लेट्स सपोज आपका टॉपिक है एजुकेशन, आपका टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट, आपका टॉपिक है सोशल मीडिया, आपका टॉपिक है डेमोक्रेसी, आपका टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपका टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, आपका टॉपिक एजुकेशन मैंने बोल दिया। इसके अलावा आपका कोई भी ऐसे टॉपिक्स हैं, आपने वो टॉपिक को अपने पास नोट कर देना है। इसके बाद आपके पास टॉपिक हो सकते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के रिलेशंस डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं, CPAC उसमें आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकता है, उसमें इंटरनल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। आपने इस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स को पिक करके आपने एक लिस्ट बनानी है अपने पास एक पेज पे। फिर आपने क्या करना है, आपने उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने जर्नल, अपने नोटबुक, अपने रजिस्टर के पार्टीशन कर लेने हैं 10 पेजेस, 20 पेजेस छोड़ के। जैसे आपने फर्स्ट पेज पे आप टैग लगाने, वो पेज सेपरेटर्स मिलते हैं, उसको आप सेपरेट कीजिए। उस एक पे आपने लिख दिया एजुकेशन, 10 पेजेस छोड़ दीजिए, 20 पेजेस छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लिखिए विमेन एम्पावरमेंट या जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी। उसके बाद आप चले जाए फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आप मूव कर दीजिए आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आप मूव कर दीजिए 20 पेजेस छोड़ के सोशल मीडिया। उसके बाद आप मूव कर दीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से आप करते करते अपने जर्नल के 15 to 20 टॉपिक्स आपके पास इकट्ठे हो चुके होंगे जिसको आपने गैदर अप करना है। उन 15-20 टॉपिक्स को आपने बड़ा बड़ा लिख लेना है, देन लीव 20 पेजेस एंड देन राइट अनदर टॉपिक एंड देन लीव 20 पेजेस एंड देन राइट अनदर टॉपिक। लेट्स सपोज आप ने डेली डॉन ओपन किया। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपके पास डॉन आता है, डॉन का आर्टिकल खोला, ओपिनियन में गया, आपके पास डिफरेंट आर्टिकल्स, आपने उसमें क्लिक किया। लेट्स सपोज आज का मैंने आर्टिकल ओपन किया है आप लोगों के लिए एजुकेशन रिफॉर्म्स, जिसे गजाला अमरीन लिखा है, ठीक है, ओपिनियन है, ये एडिटोरियल है डॉन का। अब आपने इसमें से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, आपको टाइटल से पता चल रहा है दे आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन रिफॉर्म्स, एजुकेशन की रिफॉर्म्स क्या है। अब आपने जो चीज़ें नोट डाउन करनी है, सबसे पहले आपने फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसको पढ़ना क्यों है, जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, देन आपका बॉडी पैराग्राफ्स होता है, उसमें बॉडी आती है सेकेंड, देन कंक्लूजन। तो आप इफ़ वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसमें आप एक स्टैंस लेते हो जिसे हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं कि आप उस टॉपिक के साथ एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। आप अपना पहला स्टैंस ही अपने
فرسٹ پیراگراف میں دے دیتی ہوں، جس سے ایگزامینر کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اسی کا اسٹانس ہے. اسی طرح اوپینین میں بھی جب آپ ڈان کے آرٹیکلس کو گو تھرو کرنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ میرے ساتھ، میں ڈیلی ایک آرٹیکل آپ کو کور کرواؤں گی. اس آرٹیکل میں آپ کو ایک اسٹائل پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے. اب آپ نے اس میں سے انفارمیشن کیسے گیدر کرنی ہے. یہ ہمارے پاس ہمارا آج کا آرٹیکل ہے ایجوکیشن ریفارمس. اس میں سے آپ نے اپنے جرنل پہ جانا ہے ایجوکیشن والے پورشن پہ. دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ ریڈنگ دس آرٹیکل. میں آپ کے ساتھ آرٹیکل پڑھنا شروع کرتی ہوں. پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری that needs immediate reforms in its education sector. So اس میں آپ کو سٹانس بہت کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ایجوکیشن ریفارمس پہ رائٹر کا کیا سٹانس ہے کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے جس کو ریفارمس، ایجوکیشن ریفارمس کی امیجیٹ نیڈ ہے. The curriculum of all the technical institutions is often outdated and that needs to be modernized. We have made education a product merely to be bought following a specific timeline. The student seems to be awarded a degree in return for the time spent at the academic institutions. The teachers do not encourage them to use their minds and employ intelligence to reach tangible and plausible conclusions. اب اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ جو رائٹر نے سٹانس لیا ہے اس نے اس سٹانس کو ایگزامپلس کے ساتھ، اپنے آرگیومنٹس کے ساتھ ایکسپلین بھی کیا ہے کہ پاکستان کو ایز اے ڈیولپنگ کنٹری، وائی پاکستان ایز اے ڈیولپنگ کنٹری نیڈس امیجیٹ ریفارمز ان اٹس ایجوکیشن. بیکاز ہماری جو کریکولم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ہمارا ماڈرنائزڈ نہیں ہے ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجیز. ہم نے ایجوکیشن کو صرف ایک ڈگری کے لیے رکھ لیا ہے. ہماری اکیڈمک انسٹیٹیوشنس ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو نہیں انکریج کرتے کہ اپنا دماغ استعمال کریں، بلکہ جو وہ ٹائم ایکسپینڈ کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں یا انسٹیٹیوٹ میں، اس کے بجائے ان کو ایک ڈگری سے اوارڈ کر دیا جاتا ہے. Very rarely we do find them talking about attributes like ethics, loyalty, tolerance, perseverance, consistency, integrity, honesty, comradeship and truthfulness. ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ان مورل ویلیوز کے بارے میں بات کر رہے ہوں، بلکہ انسٹیڈ دے آر بزی ان cramming the things and stuff like that. Since Pakistan is a multi-ethnic nation, respect and tolerance for all culture must be inculcated in the students. The culture of reading books must also be encouraged along with developing logical, scientific and critical thinking in them. All these qualities combined together can make them better individuals. اب اس میں وہ اب دیکھیں آگے ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف کو لنک کیسے کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک ملٹی ایتھنک نیشن ہے اور رسپیکٹ اور ٹالرنس جو ہے دیٹ از ان آر کلچر اینڈ اٹ شوڈ بی انکلکیٹڈ ان دا اسٹوڈنٹس. انکلکیٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ اب اپنے وہ ویکیبلری ملتی جا رہی ہے. انکلکیٹڈ کا مطلب ہے ان کے اندر اس چیز کو ڈالنا، ان کے اندر اس چیز کو ایسے بھر دینا کہ وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے. دا کلچر آف ریڈنگ بکس مسٹ آلسو بی انکریجڈ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لاجیکل، سائنٹیفک، کریٹیکل تھنکنگ تو سکھانی ہی چاہیے اسٹوڈنٹس کو انسٹیڈ آف روٹ لرننگ میتھڈ. اس کے ساتھ ساتھ وی مسٹ انکریج آور اسٹوڈنٹس ٹو ڈیولپ اے ہیبٹ آف ریڈنگ بکس. Besides, the shortage of good teacher is also a matter of concern. In some schools, one teacher caters to hundreds of students. Teachers should also be provided professional training regularly to keep them updated with the latest developments and strategies. Now, the writer is explaining that there is a shortage of good teachers in our school as well. That is also the main concern why the education reforms are needed in the country. One of them is the shortage of good teachers. Sometimes ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کلاس میں ایک ٹیچر کو ہنڈریڈ آف اسٹوڈنٹس دے دیے جاتے ہیں. تو ہنڈریڈ آف اسٹوڈنٹس کو ایک ٹیچر کیسے دیکھ سکتی ہے؟ دیٹ مینس کہ وہ پھر ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پہ دھیان نہیں دے سکتی. اور جب وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ پہ دھیان نہیں دے سکتا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نیگلیجنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو نیگلیجنس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر سکتے، اس کی تھنکنگ کو، اس کے
पढ़ाई को हम नहीं देख सकते। अब टीचर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, टीचर्स को क्लास रूम मैनेजमेंट का नहीं पता, टीचर्स को करिकुलम डेवलपमेंट का नहीं पता, टीचर्स को टीचिंग मेथोडोलॉजीज का नहीं पता। तो इसलिए टीचर्स शुड बी प्रोवाइडेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग रेगुलरली टू कीप देम अपडेटेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड स्ट्रेटजीज। दैट मीन्स इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब है कि करंट अफेयर्स से भी अपडेटेड रहना चाहिए टीचर्स को, ताकि जब वो बच्चों को किसी टॉपिक के बारे में बताएं, ही और शी शुड बी अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स। There is a dearth of hands-on learning in our school. There is a new word, dearth. You can find the meaning of dearth, that is the shortage. For instance, if the teachers are teaching about animals, they should take the students to the zoo so that they may understand the learning better. अब वो the writer is explaining कि there is a dearth of hands-on learning. hands-on learning नहीं है, हम जो चीज़ पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिकल नहीं बच्चे को कराते, तो हम सिर्फ जो बता रहे हैं ज़ुबानी, हम वो चीज़ बच्चे को करा रहे हैं। जबकि हम बच्चे को अगर उस तरह से एग्जाम्पल्स दे दी जाए या जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो दिखा दिया जाए तो उसकी लर्निंग ज़्यादा होगी। दैट इज़ कॉल्ड हैंड्स ऑन लर्निंग। Unfortunately, our focus is on making students rote learn and pass the exam. The entrance tests conducted by many higher education institutes show lack of trust in the grades acquired by the student. Now the writer is explaining that क्या हमारा कल्चर है, our culture is rote learning. हम बच्चे को cramming सिखाते हैं, जो हम पढ़ाते हैं बस आए क्लास में, लेक्चर स्टार्ट किया, डिलीवर करना, बोर्ड का यूज़ नहीं, एग्जाम्पल्स का यूज़ नहीं, ABS का यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं, तो रोट लर्निंग करके हम पास करवा देते हैं। एंड एंट्रेंस टेस्ट में क्या होता है कि इसी तरह रट्टा लगा के बच्चे पास कर जाते हैं, जिसके ग्रेड्स जो हैं वी कैन नॉट ट्रस्ट देयर ग्रेड्स। In this scenario, there is a great need to introduce technology and promote online learning through improvement in the infrastructure. Now see, the writer is coming to the conclusions of all these problems. So, in this scenario, what is needed? It is needed to introduce the online technology, online learning through technology. जब हम अपना infrastructure बेहतर करेंगे तब ही हम online learning की तरफ जा सकते हैं। Institutional incubation centers or startup centers may be set up. Moreover, a serious as well as effective crackdown on non-functional schools specifically across Sindh and Balochistan should be carried out. अब इसमें देखें एक और चीज़ है कि नॉन फंक्शनल स्कूल, जिसे हम गोस्ट स्कूल्स भी कहते हैं, देयर आर सो मेनी स्कूल्स, दे आर नॉन फंक्शनल specifically in Sindh and Balochistan, so there must be a crackdown against them. At the level of higher education, funding for research and development must be increased. Use of technology should also be increased in the research methodology. Along with this, much needed faculty development programs for the supervisors should also be initiated to facilitate the students pursuing higher education. Now the writer is coming to the conclusion and suggesting the ways to improve the situation of education in Pakistan. So the writer is saying कि हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में एक तो हम फंडिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करना चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में, एंड अलॉन्ग विद दिस मच नीडेड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द सुपरवाइजर्स should also be initiated to facilitate the students. Enhancing the quality education through reforms and policy interventions along with resource allocation can be an effective way to improve the quality and standard of education in Pakistan. And this is the concluding paragraph. So उसने जो स्टैंस लिया था, आप स्टैंस भी देख सकते हो स्क्रीन पे, पाकिस्तान इज डेवलपिंग कंट्री दैट needs immediate reforms in its education sector. After giving the stance, the writer explained why she has taken this stance. उसके बाद the writer gave few of the reasons or problems, and then after problems she gave the conclusion. And now in the concluding paragraph, the writer is saying enhancing the quality of education through reforms and policy interventions along with the resource allocation can be an effective way to improve the quality
کیا کرنا ہے. آپ لوگوں نے اس میں سے کیا کیا امپورٹنٹ نیو وکیبلری، دیکھیں ہر ٹاپک کی وکیبلری ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کہیں کہ میں وکیبلری رکھ لوں، کوئی 100 ورڈس 200 ورڈس نئے رکھ لوں اور اس کو کہیں پہ بھی ایڈجسٹ کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہر ٹاپک کی وکیبلری ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایجوکیشن کی وکیبلری اسپیسیفک ورڈس ہیں جو ایجوکیشن کے ٹاپک پہ آپ یوز کر سکتے ہو. جینڈر ایکوالٹی کی اسپیسیفک وکیبلری ہے جو صرف جینڈر ایکوالٹی میں ہی جاتی ہے. سوشل میڈیا کی اسپیسیفک وکیبلری ہے جو آپ اس ٹاپک پہ جب لکھنا شروع کرتے ہو تو اس پہ یوز کرتے ہو. اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے، سب سے پہلے آپ کو تیسری اسٹیٹمنٹ بہت اچھا اسٹینس ہے. پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری دیٹ از امیجیٹ پرفارم ان اٹس ایجوکیشن سیکٹر. اس کو آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجیے ود اے بولڈ مارکر ان دا سیکشن آف ایجوکیشن دیٹ یو ہیو میڈ ان یور رجسٹر. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، ہیڈنگ دینی ہے پرابلمس ان ایجوکیشن. آپ پرابلمس ان ایجوکیشن میں جو اس پیراگراف میں پرابلمس بتائے گئے ہیں اس پرابلم کو فریز کی فارم میں آپ نے لکھنا ہے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. See, the curriculum of all the technical institutions are often outdated. So you can write outdated curriculum. Then you can write here were some of the problems that we discussed. Yes. Shortage of good teachers, dearth of hands-on learning. These are the points that you can add in the problems, and these are the points that you can use when you are writing the paragraph or you are writing the outline of a paragraph. Major focus on making students rote learn. یہاں اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں major focus on rote learning. Then come to the heading دیجیے solutions. اب solutions میں کیا کیا ہے؟ Need to introduce technology to promote online learning. Then the other point could be in the solution is improvement in infrastructure. Then the other point could be crack down on non-functional schools. Then the other point in the solutions could be the funding for research and development. Then the other point in the solutions could be use of technology. And then this concluding paragraph, write down in the conclusion. Whenever you come through any of the articles that is regarding education, just write down those words in the education section. So I hope آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا جس طرح سے میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے اپنے ڈان آرٹیکلس کا کس طرح کور کرنا ہے. تو اس طرح سے ہم روز کا ایک آرٹیکل کور کریں گے. If you want to stay in touch, if you want to maintain your journal, do subscribe to this channel. I will be creating a playlist for you guys so that you can go through the dawn articles daily and you can maintain your journal accordingly. So that's all from my side. Take very good care of yourself and work hard, study hard. Thank you. Allah Hafiz.